Right, but so rabies, it can produce the severe encephalitis once it is in your brain. बहुत सारे रेबिड मैमल्स होते हैं जिनके बाइट करने से ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है बेटा, जिनमें वाइल्ड डॉग्स सबसे कॉमन है, बाकी बैट्स वगैरह से भी ये होता है, ठीक है, कुछ कैट से भी होता है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये अगर आपकी स्किन है तो स्किन पे अगर डॉग बाइट करता है तो वायरस रिलीज़ होता है, उसका जो टॉक्सिन होता है वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू कैरी होता है और पेरिफेरल नर्व्स उसको लेके आके आपके ब्रेन के पास लेके आती हैं और ब्रेन में सीवियर एंसेफलाइटिस कराता है ये, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ब्रेन में जहाँ पे ये लेयन बनता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, एंसेफलाइटिस होती है, there is edema grossly and the blood vessels become very much congested. Under the microscope you see there is the neuronal degeneration neuronal degeneration and inflammatory reaction most severe in the brainstem part of the brain. I mean to say, if there is the dog bite on the skin and it goes through, the toxin released goes through the peripheral nerves all the way to the brain. If this is the brain you see again, then you will see the brain stem part is mostly affected. In case of the rabies induced encephalitis, brain stem is mostly affected. So inflammation is there. What are the features of inflammation in case of this infection? Edema, vessels are congested, यहाँ पे जो neurons होते हैं वो damage होते हैं, simple, okay. एंड व्हाट आर द पैथोग्नोमिक फीचर्स, जहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ मिलती हैं जिनको हम कहते हैं नेगरी बॉडीज़। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। यू टेक आउट वन न्यूरोनल सेल एंड इनसाइड दैट न्यूरॉन you will see in the cytoplasm that there is the presence of what? This is the nucleus, this is the Negri bodies, right? They are round oval bodies, eosinophilic, found in the pyramidal neurons of the hippocampus and the Purkinje cells of the cerebellum. Don't forget this, please. Inflammatory reaction is more common in brainstem. Other sites involved are other than the brainstem, the basal ganglia, below spinal cord, and the dorsal root ganglia. ठीक है, नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन द न्यूरॉन्स ऑफ द pyramidal neurons of the hippocampus number 1, don't forget, and the Purkinje cells of cerebellum. ठीक है, नेगरी बॉडीज कहाँ मिलेंगी, समझ आ गया। इन्फ्लेमेशन जो अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? ब्रेन स्टेम को। द अदर अफेक्टेड साइट्स में भी दिस, राइट, ओके। व्हाट अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बेटा? द सेम थिंग आई टोल्ड यू अर्लियर कि जहाँ पे बाइट होता है वाउंड साइड जो होती है वहाँ से वायरस जो है उसका टॉक्सिन कैरी होता है सीएनएस की तरफ थ्रू द पेरिफेरल नर्व्स। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस इज़ अबाउट 1 to 3 months, जिस पीरियड में कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। डिजीज़ बिगेंस विद द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अर्लियर, मलेस, हेडेक, फीवर का होना और थोड़ा लोकल पारेस्थीसिया, जो जहाँ पे बाइट साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉग ने बाइट किया है तो यहाँ पे पारेस्थीसिया हो जाएगी। जो फीलिंग है, जो सेंसेशन है वो चली जाएगी एक्चुअली। तो जो जिस जगह पे बाइट हुआ था वहाँ पे पारेस्थीसिया हो जाएगी, कुछ भी आपको फील नहीं होगा, ठंडा गर्म दर्द वगैरह कुछ चीज़ नहीं, ठीक है। और ये बड़ा डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है। अर्ली सिम्टम्स क्या है बेटा? मलेस, हेडेक, फीवर, और वाउंड वाली जगह पे, बाइट वाली जगह पे लोकल पारेस्थीसिया हो जाएगी। ये तो अर्ली केसेस में। एडवांस डिजीज़ में देयर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीएनएस एक्साइटेबिलिटी, Even the slightest touch will be very painful. You even touch the patient very slightly. It is usually not painful, but he will complain of very painful touch. Violent motor responses. आप उसके करीब जाओ पेशेंट के, वो ऐसे हाथ पैर चलाएगा, वो काफ़ी वायलेंट होता है, आपको इवन नुकसान भी कर सकता है। कंट्रैक्शन ऑफ द फेरेंजियल मसल्स ऑन swallowing, जब वो कोई भी चीज़ swallow करता है उसके फेरेंजियल मसल सुकड़ से जाते हैं, तो जब वो कुछ भी swallow करने की कोशिश करता है वो swallow कर नहीं पाता और काफ़ी उसको पेन होता है, ऑर्डिनोफेजिया हो सकती है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन swallowing द वाटर, इस वजह से पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होती है, ठीक है। सो वेन एवर ही ट्राइज टू swallow एनीथिंग, उसके फेरेंजियल मसल्स शदीद कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर रहती है और वो swallow नहीं कर पाता, निगल नहीं पाता, उसको काफ़ी दर्द होता है। इस वजह से खास करके ये वाटर से होता है, तो इस वजह से उसको पानी से नफरत सी ही हो जाती है, डर सा लगने लगता है। दैट इज़ वाई वी कॉल द हाइड्रोफोबिया। एंड ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज़ द infection involving the CNS, so there has to be the meningeal irritation,
flaccid paralysis in case of the spinal cord involvement, and alternating periods of the mania and the stupor. Mania is a increase, is kind of opposite of depression को हम mania कहते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाए और आप ज़्यादा टॉकेटिव हो जाओ और ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाए, दैट इज सेड टू बी द मेनिया। अर्ली ऑन मेनिया होती है, बट लेटर इट कैन प्रोग्रेस टू कोमा एंड अल्टीमेटली death from the respiratory failure. So you understand what is this, how it is progressing early on? Simply the headache, fever and malaise. You may be confused कि ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक पॉइंट होती है लोकल पारेस्थीसिया। जिस जगह पे वाउंड था, बाइट साइड थी, वहाँ पे लोकली पारेस्थीसिया हो जाएगी। एडवांस डिजीज़ के अंदर सीनियस एक्साइटेबिलिटी, स्लाइटेस्ट टच काफ़ी पेनफुल होगा, वायलेंट मोटर रिस्पॉन्सेस होंगे पेशेंट के, समटाइम्स कन्वल्जेंस भी होती हैं, और हाइड्रोफोबिया ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ द फेरेंजियल मसल्स। ठीक बेटा, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद थोड़ा HIV को देख लेते हैं, ठीक है। राइट बेटा, सो HIV having some party in the brain, let's talk about it, what it does. Produces aseptic meningitis early on as it is a virus. So HIV is simply, once you develop this infection, the pool of infections develop in your body. One is this, involving the CNS, causing meningitis within 1 to 2 weeks of seroconversion. जैसे एंटीबॉडीज कन्वर्ट होती हैं अगेंस्ट, मतलब प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट HIV. So you no sooner the antibodies turn from 0 to high, antibody titers goes highs against this virus in the blood, you develop the aseptic meningitis in 10% patients at least. During the acute phase of the HIV infection of CNS, that means acute meningitis, there is obviously mild lymphocytic meningitis, perivascular inflammation, and the loss of the myelin sheath from the neurons. These are the early on acute phase of the HIV, shows this. Meningitis is there, that means there is the infection, inflammation of the meninges, and there is a presence of the lymphocytes, as obviously it's the viral infection, and the blood vessels present, they also show inflammation, and the loss of neurons from the brain substance, loss of myelination from the neurons of the CNS, right? During the chronic phase, encephalitis develops. Early on in the acute phase, there was the meningitis, but later in the chronic phase, not the meninges, but the brain substance is involved, and it is now called the encephalitis. Okay. Talking about the morphology, you will see there is number one, the microglial nodules. As I told you that there is the myelin loss, so ultimately there is the neuronal damage, and if let's suppose this is the neuron which is now damaged, this is the damaged neuron, this is the damaged neuron. So around this damaged neuron, the microglial cells collect, and the aggregates of the microglial cells, these are called microglial nodules. Why do these microglial cells are collecting here? To eat this dead neuron called neuronophagia. This process of eating of dead neuron by these microglial cells, that is called the neuronophagia, right? And there is the focus of the tissue necrosis, जहाँ पे डैमेज होता है सेल्स का, न्यूरॉन्स का, that is the focus of the tissue necrosis, और उसके अंदर अराउंड ग्लायोसिस होती है, यानी कि ग्लायल सेल्स रिएक्टिवली proliferate करते हैं. In some cases there is the disorder of the white matter characterized by the multifocal or diffuse areas of the myelin pallor, axonal swelling and the gliosis. In very few cases white matter is involved. Simply you have to remember. In acute phase, there is the meningitis. In chronic phase, there is the encephalitis. In both the cases, you see there is the inflammation on. In encephalitis, you will see there is the neuronal damage. The neurons are damaged. Around these neurons, you will see the microglial nodules. They are performing the neuronophagia, right? That's it, nothing else. Okay. Another term is associated with HIV/AIDS induced CNS infection, that is IRIS. That is the immune reconstitution inflammatory syndrome. Immune reconstitution inflammatory syndrome, what it is actually, let me tell you. It occurs in patients with AIDS after the effective treatment. You provide the patient with the antiretroviral drugs, you're trying to kill the HIV virus. So post treatment, effective treatment देने के बाद जो एक syndrome डेवलप होता है उसको हम कहते हैं आयरिस, दैट इज द इम्यून रिकंस्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. एक्चुअली क्या होता है, बड़ा आसान सा है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा. जो HIV का पेशेंट होता है उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है बहुत, ठीक है. लेकिन जब आप HIV का ट्रीटमेंट देते हो ना, तो ट्रीटमेंट देने की वजह से सडनली आपका HIV किल होने लगता है और जो इम्यूनिटी है वो
बढ़ जाती है, इम्यूनिटी रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। इम्यूनिटी रिकंस्टिट्यूट होने की वजह से जो सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। तो एंड ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ, आपने इम्यूनिटी को रिकंस्टिट्यूट कर दिया और इम्यूनिटी रिकंस्टिट्यूट करने की वजह से इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए और उन्हें इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। ठीक है, एंड देयर विल बी द पैराडॉक्सिकल डिटोरियोरेशन आफ्टर स्टार्टिंग द थेरापी। ठीक है, थेरापी स्टार्ट की आपने, HIV किल हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिकंस्टिट्यूट हुई और डिटोरियोरेशन अपनी बॉडी के टिश्यू के खिलाफ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी, उसका डैमेज होगा। ठीक है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन विद इन्फ्लक्स ऑफ CD8 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स, आपने ट्रीटमेंट दिया, CD8 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स का जो रेट कम से कम होता जा रहा था वो रिकंस्टिट्यूट होगा और जैसे लिम्फोसाइट बढ़ेंगे वो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड आफ्टर दिस बेटा here I have to now onwards discuss about the fungal meningoencephalitis. Let's talk about it.